If you're in the market for an entry-level small car, आपके लिए choices काफ़ी है. And recently there was the all-new Maruti Wagon R coming in also. But there's the Hyundai Santro and of course the Tata's popular Tiago. So which is the best entry-level small car for you? What should you buy? Well, in this video हम बताते हैं which one should be your choice. अगर आप डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे सो इनएक्सपेंसिव डज नॉट मीन चीप एंड ऑल दीज थ्री आर अबाउट दैट ऑल्सो. अगर आप देखेंगे मारुति की जो नई वैगन आर है, इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ कॉम्पैक्ट एसयूवी विद इट्स बॉक्सी प्रोपोर्शंस. स्टाइलिंग में काफ़ी प्रीमियम है. इट लुक्स मच बेटर. इट्स गॉट फ्लोटिंग रूफ. देयर गॉट लॉट ऑफ डिटेल्स मिक्स्ड टुगेदर एंड इट लुक्स मच बेटर. इट लुक्स बिगर ऑल्सो. मगर आप डिज़ाइन के और साइज़ के बारे में बात करेंगे, इट इज़ द टियागो दैट इज़ मच बिगर दैन द अदर टू एंड लुक्स लाइक दैट एज वेल. डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी है एंड डिस्पाइट बीइंग अराउंड फॉर सम टाइम इट स्टिल लुक्स क्वाइट गुड एंड एक्चुअली लुक्स लाइक इट बिलोंग्स टू अ मच हायर सेगमेंट दैन द सेंट्रो और द वैगन आर. अगर आप सेंट्रो के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ी छोटी कॉम्पैक्ट लगती है व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर टू. बट हुंडई की जो लेटेस्ट डिज़ाइन है, कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को नहीं आई है. वी थिंक इट लुक्स क्वाइट गुड, has a sort of aggressive look in its own way, though kind of looks like a quirky thing, but again some people like it, some people don't, but we think it looks quite aggressive also. अगर आप इंटीरियर के बारे में बात करेंगे so obviously space, practicality and features are very important. Here the Tata Tiago feels a bit old when compared to the other two. For example, इसमें टच स्क्रीन नहीं है, which is a must have these days and which the other two have. Plus the cabin design feels a bit old now. However, in terms of space, ये काफ़ी अच्छी है. It's quite wide at the rear and the boot space is also quite good and it feels overall quite well built. But as said again, it feels a bit old and does not have as many features as the other two. The Maruti Wagon R has the longest wheelbase here and it feels like it. Space पीछे काफ़ी ज़्यादा है, headroom बहुत ही अच्छा है and boot is the biggest here. Plus it feels the most airiest here in the cabin. In terms of features भी इसमें काफ़ी अच्छी features when compared to the earlier one. Plus and then it's got the touch screen, it's got all the basic stuff you need and want. So Maruti overall has done really well with the cabin of the Wagon R. However, we feel it is the Santro that takes the lead here in terms of cabin quality. Santro की जो इंटीरियर है, it feels really the most premium here. उसकी जो materials है, it feels the most class leading and it feels the most plush. अगर आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जो बाकी दो में नहीं है, लाइक रियर कैमरा डिस्प्ले एंड रियर एसी वेंट्स. प्लस इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी है एंड इट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कैबिन एंड क्वालिटी वी फील द सेंट्रो इज द बेस्ट इन इट्स क्लास एट द मोमेंट. अगर आप इंजन्स के बारे में बात करेंगे सो ऑल दीज थ्री कार्स ऑफर पेट्रोल इंजन्स बट द टाटा टियागो इज द ओनली वन टू ऑफर अ डीजल. मगर ऑटोमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल एंड ऑल दीज थ्री कार्स ऑफर AMT ऑप्शंस टू. द सेंट्रो ऑन द अदर हैंड हैज जस्ट वन पेट्रोल इंजन while the Tata Tiago has a 1.2 and of course a diesel engine. Maruti की जो नई वैगन आर है, Maruti offers it in two petrol engines and both offer an AMT. हम इस वीडियो में बात करेंगे Maruti Wagon R 1.2 की, Santro में 1.1 and of course the Tata Tiago with the 1.2 petrol engine. In terms of overall smoothness, in terms of automatics, we feel the Santro की जो AMT है वो काफ़ी smooth है, so the Wagon R is not bad, but we feel the Santro's AMT is slightly better in terms of overall sort of smoothness and convenience it offers. In terms of manual gearbox, we feel it is again the Maruti Wagon R which offers the slickest manual here, और clutch और steering इसकी सबसे light है, which means it's quite easy to drive. But again, it's quite relative. All these three cars are quite easy to drive. जो steering है वो काफ़ी light है and again are very convenient to use and park in the city. मगर अगर हम हाईवे के बारे में बात करेंगे, it is the Tata Tiago that feels the most sure-footed and feels the most enjoyable to drive. उसकी जो स्टीयरिंग है वो स्लाइटली बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर टू एंड इट फील्स लाइक इट. प्लस इससे पावर सबसे ज़्यादा है एंड इट फील्स द मोस्ट एन्जॉयबल टू ड्राइव. मारुति की जो नई वैगन आर है, इसमें एक 1.2 पेट्रोल दी गई है विच मीन्स इट इज़ द मोस्ट पावरफुल हेयर इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट. मगर इसकी स्टीयरिंग थोड़ी लाइट है एंड डज नॉट फील एज फन इन दी हाईवेज और व्हेन यू वांट दैट हाई स्पीड स्टेबिलिटी. टाटा की जो टियागो है here feels the most competent here and it is the most fun to drive. Hyundai की Santro, well it's a competent city car and उसमें power थोड़ी कम है when compared to other two with the 1.2 petrols. मगर for the city use it feels quite nice and sort of does the job. However, if you want fun to drive, it is the Tata Tiago. If you want fuel economy, it is the Maruti Wagon R that takes the lead here. But if you want smoothness and you want the automatic, Hyundai की Santro is the better choice. So which is the best small car then? Well, in terms of prices, all three cars are nearly the same priced at the top end, petrol, AMT or the manual. So which should you buy? Well, अगर आपको स्पेस चाहिए
practicality चाहिए and fuel economy चाहिए, well, the Wagon R is the one. It's the most practical here and sort of ticks all the boxes as an urban city car, and we recommend the AMT. However, if you want something a bit more sportier, and of course you want features and you want sort of premium cabin, then the Santro ticks the boxes. Plus the Santro has the smoothest AMT, so well, in that way the Hyundai Santro works really good. However, if you love to drive and you want something that slightly different and you want something that looks quite good, well, the Tata Tiago, though obviously it feels a bit old now in terms of features and interiors when compared to other two. So all these three cars are the best in the under 6 lakh segment. So decide what you need and want, and well, pick any one of the three, and of course you will not be disappointed with that.